Hey everyone, welcome to Primary Market Chatter brought to you by Sunday Investing. This is our June 4th week episode, part 2. So हमने पार्ट 1 में एलेनबरी और कल्पतरू की बात करी थी और ग्लोब सिविल की बात करी थी. तीनों आईपीओ आज क्लोज हो गए हैं. We wanted to do another part where we'll do the other two IPOs which are closing on Mainboard side, which are HDB Financial and Sambhav Steel. I know there's a lot of interest for HDB Financial. And then we'll also do one SME, Suntech Infra. Question might come कि क्यों Suntech Infra out of so many SMEs? It's just that was the only one which we have read. There might be a few which we haven't read and are good. So we usually don't cover anything or cover all, but this time simply because there are so many issues, we thought that we'll just cover one of them while we still can, and then do the other two main board raises. That is about the plan for the day. Before I actually get started, couple of disclaimers which almost everyone would know. यहाँ पे already मैं हर बार ही बोलता हूँ कि we are not SEBI registered research analyst, so none of our opinion is a qualified opinion. Definitely do your due diligence और उसी के basis पे आप apply करें. Just take this as a supplement to your read. Do not apply basis what we are blindly basis what we are saying. Do your own due diligence. Second thing, अगर आपने YouTube चैनल नहीं ज्वाइन किया है तो ऊपर लिंक में पिंड कमेंट्स में YouTube चैनल है. प्लीज गो अहेड एंड सब्सक्राइब टू द YouTube चैनल एज वेल. अगर आपको कोई क्वेश्चन हो बीच में तो डेफिनेटली पोस्ट योर क्वेश्चंस इन द चैट बॉक्स एज वेल. We will be taking questions. I see that there are people who are saying to accept request. As a format, we do not accept request on this show for listeners. अगर आपको कोई question है तो आप chat में डाल दें. We will be glad to take questions as well. कोशिश करूंगा मैं हिंदी में बोलूं, but it will be a mix of Hindi and English only. That is how we have done the spaces till now, and that is how we'll continue. उसके बाद आई सी तन्मय इज हियर एज अ स्पीकर. काफी पीएनसी चल रहा है. कभी तन्मय करता है स्पेस, कभी यश करता है, कभी रोहित करता है. इट्स जस्ट दैट टाइम हैज बिकेम लाइक बिकॉज ऑफ सो मेनी आईपीओज एंड ऑल्सो बिकॉज वी आर स्लाइटली बिजी. तो हम चारों का एक साथ आना नहीं हो पा रहा है अनफॉर्चुनेटली. सो टुडे विल बी मिसिंग रोहित एंड यश, and it will just be me and Tanmay who will be doing the space, but hopefully next week say we'll try and see how it evolves. But what we want to do is we want to continue the momentum that we have, और हम companies के बारे में बात करते रहना चाहते हैं. That is the plan, but again we will let you guys know how it comes along. I got a lot of positive messages last week in terms of like continuing with all the good work. So that was great to know. Thank you so much for all the love that you guys have been giving us. Means a lot to us for everything that you do. ये जो स्पेस है ये भी हम उस पे डाल देंगे यूट्यूब पे. तो अगर आपने नहीं देखा है तो आराम से आप उस पे देख सकते हैं. विद दैट मे बी एक बार फॉर्मेट डिसाइड कर लेते हैं. तन्मय पहले आपको करना है क्या संभव, और डू यू थिंक आई शुड स्टार्ट विथ, और लाइक हाउ डू यू वांट टू डू इट? You can start with Suntech, then I can go with HDB, then we will do Sambhav. Got it. ठीक है. So plan simple है. We'll first quickly do Suntech Infra. Let me set up Suntech Infra. The company is incorporated in 2009 and is a business-to-business B2B construction company. The company provides civil construction services through direct contracting, subcontracting, and also does equipment rental. Company has 6 projects going on valued at 186 crores right now and has an additional order book for construction equipments. तो जब बात करेंगे तब उसके बारे में और समझते हैं. जस्ट आईपीओ सेटअप कर देता हूँ. डिसेंट साइज आईपीओ है. 44 करोड़ का आईपीओ है. तो इट्स अ एवरेज साइज आईपीओ. 12 करोड़ का ओएफएस है 12 सीआर का. 32 सीआर इज अ फ्रेश इशू. 32 सीआर कंपनी में जा रहे हैं. 12 सीआर कंपनी का प्रमोटर जो है वो ओएफएस कर रहे हैं. इन टर्म्स ऑफ द मार्केट कैप जिस पे आईपीओ आ रहा है वो 166 करोड़ का है. सो 166 करोड़ पे 44 करोड़ का डाइल्यूशन है, जिसमें से 32 करोड़ ही फ्रेश है. 12 सीआर का ओएफएस है.
इन टर्म्स ऑफ FY24 फाइनेंशियल्स, FY25 फाइनेंशियल्स, अगर नहीं 25 तो है नहीं अभी क्योंकि 9 मंथ्स का डेटा दिया हुआ है, सो FY24 के फाइनेंशियल्स की बात करूं तो उनने 100 CR का रेवेन्यू किया था अप्रोक्सीमेटली, लाइक 96.25 करोड़, एंड 9.25 करोड़ का बॉटम लाइन किया था. सो इट्स कमिंग एट लाइक 16 P FY24. अभी FY26 में अपन 3 महीने हो गए हैं आज, ऑलमोस्ट अबाउट टू कंप्लीट फर्स्ट क्वार्टर. सो आगे के प्रोजेक्शंस पे देखते हैं. But that is what the P is coming at FY24. In terms of the LM is GYR Capital. तो GYR Capital का इश्यू है. So एक बार कंपनी के बारे में बात करते हैं, बहुत ही बेसिक समझने के लिए. कंपनी, इट्स अ गुड कंपनी विच इज इनटू B2B कंस्ट्रक्शन करती है, और उसके अलावा अपने जो इक्विपमेंट लगते हैं कंस्ट्रक्शन में उनका रेंटल भी देती है. सो जैसे कंस्ट्रक्शन में भी जो पाइलिंग वगैरह सर्विसेज होती हैं और सिविल ब्रिजेस वगैरह बनते हैं, टर्न की पाइल फाउंडेशन, जो फाउंडेशन होती है, जो भी अपनी छत डलती है तो प्लिंथ वगैरह जो जब डलती है तो उसमें पाइलिंग होती है, उसका काम करती है. और सिविल कंस्ट्रक्शन करती है, ब्रिजेस, इंडस्ट्रियल ब्रिजेस वगैरह बनाती है. फिर उसी के लिए जो मशीनें लगती हैं, जैसे मैं देख रहा था कुछ कुछ मशीनें जो उन्होंने नाम दे रखी थी, उन मशीन्स को ये बेसिकली ले लेते हैं और फिर रेंट पे देते हैं जो जिनके यहाँ कंस्ट्रक्शन चल रहा हो. सो बेसिकली टू फोल्ड बिजनेस है, दो डिवीजन है बिजनेस के. एक तो सिविल कंस्ट्रक्शन है और जो दूसरा है वो अपना रेंटल है, जिसमें ये लोग बेसिकली ये अपनी जो मशीनें, रोटरी पाइलिंग, क्रॉलर क्रेन, विब्रो हैमर, ये सब जो मशीनरी होती है, ये इनके पास 126 मशीनें हैं अभी ऑलरेडी, ऐसे अलग अलग प्रकार की. जेसीबी टाइप की आप समझ लो, फॉर द लैक ऑफ अ बेटर वर्ड. वैसी मशीनें इनके पास हैं बुक्स पे जो ये रेंट करते हैं. कंपनी के पास ऑर्डर बुक है. अभी इनके पास अप्रोक्सीमेटली 8 ऑर्डर अभी इनके चल रहे हैं, जिसमें इनका 317 करोड़ का ऑर्डर बुक है. और कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट के लिए भी इनके पास लगभग 5 CR का ऑर्डर बुक है. तो कंपनी बेसिकली रेंटल में है, सॉरी कंस्ट्रक्शन में है, एंड अच्छा काम कर रही है. मोस्टली दिल्ली एंड बिहार साइड पे काम करती है. तो जैसे इनने IOCL, अल्ट्राटेक, इन सब जगहों पे काम किया हुआ है. और उसके अलावा रेंटल भी वहीं पे ही देती है. मोस्ट ऑफ द क्लाइंट्स आर नॉन गवर्नमेंट. इनफैक्ट ऑल आर नॉन गवर्नमेंट. देयर हार्डली एनी रेवेन्यू फ्रॉम गवर्नमेंट बेस्ड. couple of things which I felt were off was that एक कस्टमर से 51% टर्नओवर है, बट अगेन दैट इज हाउ यू विल अज्यूम दिस बिजनेस टू बी. मतलब 51, वो मेरे को लगता नहीं कि कस्टमर कंसंट्रेशन रिस्क है, क्योंकि B2B बिजनेस है, 8 ही उनके ऑर्डर हैं, तो कोई ना कोई एक बड़ा चल ही रहा होगा कंपैरेटिवली. सो दैट्स नॉट अ लॉट टू बी वरिड अबाउट. अनएग्जीक्यूटेड ऑर्डर बुक की बात करूं जो अभी इनको चालू करनी है, तो 83 CR की वो अनएग्जीक्यूटेड ऑर्डर बुक है. तो जैसे ही ये नया वर्किंग कैपिटल आ जाएगा उससे ये करेंगे. सो जैसे मैंने बताया 32 CR रेस कर रहे हैं. 12 CR वर्किंग कैपिटल में जाएगा, 12 CR कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट में जाएगा, जिससे ये कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट खरीद के फिर से रेंट पे देंगे. और बाकी GCP है. सो मेजरली वेरी इजी बिजनेस. लाइक there's not a lot of moat in the business, but the moat is just the execution and the availability of working capital. तो यहाँ पे कंपनी पे वर्किंग कैपिटल आएगा तो they should be able to cut their PE quite drastically. जैसे अभी 12 PE पे अवेलेबल है कंपनी. एक बार बात कर लेते हैं फाइनेंशियल्स की, एक बार समझ लेते हैं फाइनेंशियल्स को. सो कंपनी का रेवेन्यू जो है वो FY22 में 72 CR था, FY23 में 86 CR हुआ, FY24 में 96 CR हुआ. सो कांस्टेंट ट्रेजेक्टरी. एंड देन FY25 में शुरुआत के 9 मंथ्स में उनने 91 CR किया है. और क्योंकि Q4 हैवी बिजनेस है, तो यू वुड एक्सपेक्ट कि अगर आप एनुअलाइज करोगे तो 120 CR होगा, बट दे शुड डू समथिंग मोर, लाइक 130, 140 CR टाइप का इनका टॉप लाइन हो जाना चाहिए. सिमिलरली बॉटम लाइन हैज ऑल्सो बीन इंक्रीजिंग. 3 करोड़ का FY22 में था, FY23 में इट बिकेम 6 CR, FY24 में 9 CR. अभी इन्हें 10.28 ऑलरेडी कर लिया है. सो बेसिस दैट यू वुड थिंक 13 टाइप आना चाहिए नंबर, बट आई वुड थिंक इट विल कम एट समवेयर अराउंड 14 CR. दैट इज व्हाट द एस्टिमेट इज, रीजनेबल एस्टिमेट इज, इन टर्म्स ऑफ लाइक वेयर द बिजनेस इज गोइंग टूवर्ड्स. तो अगर 14 CR का बॉटम लाइन आता है तो दे आर कमिंग एट लाइक 12 PE. एंड द थिंग इज कि क्योंकि वर्किंग कैपिटल आएगा बिजनेस में, सो दे विल बी एबल टू एग्जीक्यूट न्यू प्रोजेक्ट्स. मशीन लेंगे, वो डाल पाएंगे रेंटल पे, तो दैट शुड ऑल्सो हेल्प with cutting further PE further. So I expect कि बिजनेस में अराउंड लाइक जैसे अभी ये 130 करोड़ का टॉप लाइन कर रहे हैं, तो दे शुड बी एबल टू डू समवेयर अराउंड 180 CR ऑफ टॉप लाइन इन FY25. वी आर ऑलरेडी FY26, वी आर ऑलरेडी 3 months in FY26. So it's a reasonable bet to get. So it's coming decently cheap, like around
10 PE, I think, or something like that, 8, 9 PE, FY26. So good bet to take. Two, three risk which I want to highlight कि कंपनी में ना 40 CR की डेप्थ है बुक्स पे, विच एंड ऑफ द डे इज अ पास थ्रू, क्योंकि वो मशीन वगैरह जो ली हुई है उनने 126 मशीन वो रेंट पे ली हुई है, मतलब वो ईएमआई पे ली हुई है, और उनका ईएमआई फिर कंपनी भरती है थ्रू द कैश फ्लोस। मतलब बेसिकली जैसे 10,000 ईएमआई है, अगेन मेकिंग ऑफ द नंबर्स, बट 10,000 ईएमआई है तो कस्टमर से 12,000 लेंगे उसका और बीच का 2,000 रुपए रख के ईएमआई भर देंगे। बट 40 CR का डेप्थ है, डेप्थ नहीं चुकाया जा रहा है इशू से, लाइक प्राइमरी इशू से। आई विश वो किया हुआ था तो दैट वुड हैव आल्सो हेल्प, बट डेप्थ बिल्कुल नहीं चुकाया जा रहा है। इनफैक्ट एक ओएफएस भी है 12 CR का, व्हेन देयर इज ऑलरेडी डेप्थ ऑन द बुक। सो अगेन दैट इज वन थिंग टू क्वेश्चन और वन थिंग फॉर यू टू काइंड ऑफ रीड आउट मोर। सेकेंड थिंग विच आई वॉन्ट टू हाईलाइट इज कि कंपनी के जो दो, एक यार्ड है उनके पास और एक रजिस्टर्ड ऑफिस है। फॉर बोथ द रेंट इज लाइक 2 लाख रुपीज पर मंथ विच गोज टू द प्रमोटर, लाइक प्रमोटर एंटिटी का ही, वो प्रमोटर के नाम से वो बिल्डिंग है, फिर उसका कंपनी जो है रेंट भरती है। अगेन सी हाउ यू वांट टू रीड इनटू इट। इफ यू वांट टू रीड टू मच इनटू इट, the promoter is already taking out 5 lakh rupees per month salary, and then there is these 2 lakh rupees car rental, then there's this OFS of 12 CR. So just see how you want to read into it. Should you read much into it or not? But it's a cheaply priced company. Uh, and should be applied at least for listing gains. But वही problem ये है कि इतने सारे issues एक साथ हैं that I am sure a lot of people like me would be just short of funds, especially because Mainboard इतने सारे available हैं that SMEs में जहाँ पे chances already काफी कम होते हैं मिलने के, वहाँ पे would you want to apply or not? I was seeing इसका retail आज already like some 25x हो गया था, which was like you don't know how much you'll get, but I would maybe put a few token retail applications here. इन टर्म्स ऑफ जो एंकर बुक आई थी, तो एंकर बुक अच्छी थी। देयर वाज एचडीएफसी बैंक इन इट, साइंस स्टार बिल्डकॉन था, आर्ट एआईएफ था, सो लॉट ऑफ नॉर्मल नेम्स, बट अगेन इट्स अ कंस्ट्रक्शन बिजनेस एंड ऑफ द डे, सो यू कांट एक्सपेक्ट एनीथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, बट इट्स जस्ट दैट द पी दैट इट हैज केम इन इज चीप। लाइक 12 के पी पे है FY25 पे, और फॉरवर्ड पी क्योंकि 3 महीने अब अपने को ऑलरेडी हो गए FY26 में, तो आप फॉरवर्ड पी देखोगे तो लगभग लगभग लाइक आई थिंक 8-9 PE पे मिल रहा है कंपनी। सो आई एक्सपेक्ट लाइक 20 to 25% लिस्टिंग गेन्स एटलीस्ट ऑन अ गुड डे, बट लाइक लॉस नहीं होना चाहिए आई फील। तो इफ आई हैड द मनी आई वुड अप्लाई, बट आई थिंक आई जस्ट पुट अ फ्यू टोकन रिटेल एप्लीकेशंस हियर। दैट इज व्हाट माय रिव्यू इज ऑफ Suntech Infra Solutions. Tanmay, do you have anything to add, or we can go forward to HDB? Actually, I was also a part of a YouTube live with the promoter and also had a call with the promoter also. So found the company pretty decent. Like what I can able to see is ki FY25 they are closing on a very good note, and even the FY26 is looking quite good because they have like I guess 350 crore of a what we can say the ongoing projects and like roughly 150 kind of an order book which is expected to get completed in like let's say 12 to 18 months. So it's clear कि यार company तो अच्छा करेगा, like growth at least is a good thing. So overall, I quite like the company. Expecting good listing gains and not much interested to hold such a company for a longer term. गॉट या एग्जैक्टली, बहुत ज्यादा मोट नहीं है बिजनेस में, लिस्टिंग इन होना चाहिए, पर आगे भी पी काटते रहना चाहिए ये बिजनेस को, सो दैट लाइक इफ समवन वांट्स टू होल्ड, आई डोंट थिंक दैट इट विल लाइक इट वोंट गो इनटू अ बिजनेस जिनका लाइक वैसे एसएमई होता है ना जो लिस्ट अच्छा करते हैं फिर खत्म हो जाते हैं ओवर टाइम। आई डोंट थिंक इट विल बी वन ऑफ दोस। एलएम भी अच्छा है जीवाया, तो लिस्टिंग के लिए भी रख सकते हो, उसके बाद भी रख सकते हैं इफ समवन वांट्स टू, ऑल्दो आई वुड आल्सो पर्सनली जस्ट अप्लाई अ फ्यू रिटेल एप्लीकेशंस हियर एंड देन probably see. With that, we can move forward before we start doing HDB. Oh wow, there are like 700 people on the space now. Good to see. But yeah, there's this one comment that hope all is well between the all of you. It is. It's just that हमें time नहीं मिल पा रहा है, इसलिए आप देख रहे होगे कि कभी कोई एक आता है, कभी कोई दूसरा आता है. Because matching time has suddenly became very difficult. We will come back to a structure where you will see all four of us together. Uh,
उसके बाद लेट्स मूव ऑन टू द सेकंड कंपनी एचडीबी फाइनेंशियल सर्विसेज की अब बात करते हैं, विच इज व्हाट एवरीवनस वेटिंग फॉर. आई नो अ लॉट ऑफ पीपल वांट टू लिसन टू इट. सो just setting up the company for Tanmay, incorporated in 2007. Company is a retail focused NBFC है, non-banking financial company. It also offers BPO services such as back office support, collection and sales support services to HDFC Bank, as well as sells insurance products primarily to HDFC customers. But through and through, it's a big NBFC is what we want to look at. In terms of the IPO size, 12,500 crores का IPO है, जिसमें से 2,500 crores फ्रेश है एंड 10,000 crores का OFS है, आई 2,500 करोड़ ही कंपनी के पास जा रहा है टुवर्ड्स ऑगमेंटिंग इट्स कैपिटल बेस, एंड जो 10,000 करोड़ है वो कंपनी के प्रमोटर्स एचडीएफसी बैंक कैश आउट कर रहा है. In terms of the market cap, it is coming at is 61,200 crores. So around 20% टाइप का रेज है. 20% डाइल्यूट कर रही है कंपनी अपने स्टेक में से. FY25 के फाइनेंशियल्स की बात करूं तो रेवेन्यू 16,300 करोड़ था कंपनी का. 16,300 CR का रेवेन्यू किया है कंपनी ने, और पैट है 2,175 करोड़, यानी 2,175 करोड़ का कंपनी ने पैट किया है. So at a P level, it's at like 28 P, but again, P is the complete wrong metric in this. Shouldn't look at it by P. We look at it by PB. Maybe Tanmay will talk about it when we actually do the deep dive. In terms of the LM की तो लाइन है, BNP Paribas, JM Financial, BofA Securities, HSBC, Goldman, IIFL, Jefferies, Motilal, Morgan Stanley, Nomura, Nuvama, UBS सब हैं LM में. So that is what the basic of HDB Financial is. Maybe Tanmay, do you want to go ahead and cover HDB Financial now? Is my voice clear? Yep. So, HDB Financial is a subsidiary of the banking behemoth HDFC Bank. It is India's seventh largest NBFC in terms of AUM, which is asset under management, which is of 1.05 lakh crore. It is India's second largest and third fastest growing consumer concentrated finance company. The company has three major business verticals. The first is the enterprise lending, which constitutes like 39% of the overall book. The second is asset finance, which is 38% of the overall book, and third is the consumer finance, which is close to 23%. So the company has a pan-India network of 1,771 branches in 1170 cities and towns across 31 states and union territories. So it is clearly visible that the network of the NBFC is quite large, and the scale of the business is also very large, considering an AUM of almost 1.1 lakh crore if we just extrapolate the Q1 numbers, which are expected to come in next month. So the company is raising close to 12,500, okay, like almost $1.5 billion, out of which 2,500 crore will be a fresh issue. The fresh issue is going to be used towards augmenting of tier 1 capital, which is the growth capital or the raw material of any finance company to grow further. The rest 10,000 crores will be OFS done by HDFC Bank. So the overall shareholding of HDFC Bank will come down from 94.32% to 74.19%. Now, if I come on the financials, we'll not do it by revenue, PAT or that stuff, because it's a NBFC company, so it makes very less sense to speak on revenues and PAT. So, if we just talk on the AUM part, in FY23, the AUM was close to 70,000 crores, which has scaled up to 1.07 lakh crore in FY25. The net worth of the company has increased from 10,000 crore to almost 15,000 crores at the end of FY25. And the PAT has also scaled up from 1960 to 2176. If you just look at this figure, in FY24, you can see that PAT is close to 2460, which has came down to 2176 in FY25. The reason is very simple: increase in the provisions. Okay. So I'll come on that at a later point. If you just check on your basic metrics towards when you look at the metrics of a NBFC, so NPAs, which is gross NPA, was 2.26% in FY23, which has scaled up to like 2.73%, and NNPA, which was 0.99%, is almost like stable to 0.95%, but
has increased from 0.63%, which was in FY24. So you can clearly see कि थोड़ा सा dent है in the asset quality, because the NPAs for the overall interest industry had shown a, or you can say, a good spike in FY25. Uh, and now, let's say there are some rate cuts. There is some revival in the rural economy also, and overall the economy functioning has been improving from last 3-4 months. So hoping that the increased provisioning and the NNPS will normalize from the H2 of FY26. Okay, so the PCR, also called as provisions coverage ratio, which is like close to 56%. ROE is ROE is close to 14.7%, and return on assets is like 2.16%. If you just check on the CAGR of interest income, so it is close to 24.5%. So it is clearly visible that the company is on a decent growth path, not very aggressive, but on a sustainable growth path, because 24.5% interest income CAGR for like 2 years is not a small thing. It is a quite good growth, considering the base of the bank, which has scaled up from 70,000 to 1.07 lakh crore. If I talk on the valuation, the company is coming at a valuation of 61,388 crore, roughly 61,500. So you cannot value the NBFC based on the P or PB or EBITDA. So you have to just do a NAV multiple, which is book value multiple. So the NAV at the closing of FY25 for HDB Financial was 198.8 rupees, okay, per share. So if you just check on the net worth, it's close to 15,000 crores. But if you just add upon the new 2,500 crore capital infusion via tier 1 equity capital, which is being raised from the IPO, and your in general 15% increase in the AUM, which is very, very conservative, the NAV post IPO should be like at FY26 should be close to 245 rupees. So this translates a price to book of 2.65 times FY26 post money. Whereas the top three peers, first one is Bajaj, which is trading at 5.3 to 5.5 times FY26. Chola Mandalam or Chola Finance is trading at 5 to 5.5 times, and Sundaram is trading at close to 3.5 times. Yes, there are few more peers given in the RHP called as L&T Finance, Mahindra and Mahindra, or your Shriram Finance of the world. So if we speak on the business reality, these three names, M&M, L&T Finance, and Shriram Finance, are technically not comparable, okay, due to the significant difference in the product portfolio. If you just check on the product portfolio of HDB and then compare, you will find that these three peers of Bajaj, Chola Mandalam, and Sundaram are can be compared. So all these are trading from 3.5 to 5.5 times book value, and HDB is coming at close to or 2.65 times. So it is clearly visible that there has been very, very good scope left on the table. But you need to also check that the business superiority of players like Bajaj and Chola Mandalam is a bit on higher side of HDB. If you just compare the ROA, those are on higher side. The provisions are on much, what we can say, normalized or controlled manner. The AUM CAGR has been very robust even on those very large AUM base. So we cannot say that the price to book which is enjoyed by Bajaj or Chola Mandalam will be rewarded to HDB also. So we cannot expect that those will be apple to apple. But considering the brand name of HDB, the NBFC is a triple A CRISIL rated company. The anchor book was extremely good. Very, very strong names. All the mutual funds, all the FIIs, some good names like Gallibel Fort, or just I didn't see IFL and Quant, except that all the names of the world were there in the companies. Vanguard was also not there, but majority investors made a good allocation or took a good chunk in the anchor of HDB. You always know HDFC parentage. That has been very, very good. HDFC itself has given extremely good returns to the investors. It's another two companies which are already listed. HDFC Life and HDFC AMC have done extremely well in the markets. The rate cuts and the increase in the consumer finance
is the growth driver for this company, and the improvement in the rural economy and a big jump in the percentage of spending done by the aspirational India should drive a good growth for the company. So overall, what I feel is ki the company has done everything by its part, and the bankers have played all the role to make this issue attractive. Don't know is this price band very appealing for the investors, but I feel technically if I was at an institutional level, yes, it's extremely appealing, because you cannot get a 1 lakh crore plus book with this fundamentals and parentage at this price to book. So I feel it like that this valuations are on an appealing side, and everyone knows ki even 3 saal pehle HDB used to trade like 750 rupees 3 years back in the unlisted market, and it has even went till 1350 if I'm not wrong. Now the IPO is coming at 740. When the IPO was, when the RSP was yet to come, but that time we had our personal calculations कि यार इसका price band should be like 765 के आसपास होना चाहिए, and in reality it was like 3 to 4% below that only. 740 was an extremely good price. So what I feel, if the market conditions are even neutral, we can witness small listing gains. Like I'm expecting like 5 से 15% आराम से listing gains होने चाहिए, and the people who are interested to hold this company for more than 6 months, because I'll tell you इसका जो fundamentals का improvement है वो 2 quarter बाद ही आएगा. Okay, Q1 Q2 will be slight, there will be surely some improvement. Maybe Q2 will also see a significant improvement, but Q1 I expect to continue the lagatness, but from Q2 का थोड़ा सा part, and from Q3 the fundamentals will improve of the company, because the credit cost will go down, leading to better ROAs and ROEs. The provisions are expected to अभी I guess मोटा मोटी 560 करोड़ के टाइप का प्रोविजन है जो मैं देख पा रहा हूँ. उससे तो वो नीचे ही आएंगे, लाइक एक्सपेक्टिंग 400 450 के अराउंड का. NPA should come down at the normalized level of FY24. So overall, the people who intend to hold it for more than 6 months till 1 year, or few might even intend to hold for a very longish period of time, those can look at this company, and the people who purely want listing gains can explore this company for sure. Yes, if the market condition extremely bad, it might not deliver the listing gains, but I personally feel कि 5 से 15% का listing gain टेबल पे ऑनेस्टली बोलो, if the markets were extremely good, या 20% तक दे देगा listing gain. But given कि the listing gains at this point are the market is not following them as per fundamentals. Fundamental कुछ और है, listing कुछ और हो रही है. So it's not prudent from our end to give a what we can say blind conviction कि यार listing gain दे ही देगा, but I personally expect कि देगा. So overall I'm quite bullish on this company, and I feel it should do well. Got it. Thanks, Tanmay. I am seeing a lot of questions with respect to subscription कि big HNI कैसे लगाना है, shareholder में कितना लगाना है, कितना expected subscription है. We'll talk about all of those, but before that we'll just take a few questions, especially on my side as well. So पहले business की बात करते हैं. So जैसे मैं इसका देख रहा था, इसका consumer finance में जो काम है ना, that is much lower compared to let's say Bajaj Finances of the world. And from my understanding, consumer finance is just like is very sticky, plus it's also B2C, तो उसका मल्टीपल थोड़ा सा कंपैरेटिवली ज्यादा होता है. तो डू यू थिंक दैट इम्पैक्ट्स, क्योंकि इसका एंटरप्राइज लैंडिंग ज्यादा है कंपेयर टू कंज्यूमर फाइनेंस. एंड उसमें क्वेश्चन भी उससे बार बार यही पूछ रहे थे प्रमोटर से कि डू यू थिंक यू वर लेट इन द गेम बिकॉज ऑफ विच योर कंज्यूमर फाइनेंस बिजनेस इज लो. कंज्यूमर फाइनेंस बेसिकली योर सेल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एक्सेट्रा. What do you think about that? No, see, that market is completely controlled by Bajaj Finance, and it's very tough to crack that market. But HDFC, if you just go on and visit some of the regions in India, the presence of HDB Financial, at least in the consumer financing or this electronic financing kind of a market, is actually comparatively, not comparatively, much lower, significantly lower. And yes, I agree that the company which is more into consumer finance or this electronic finance and all this stuff will surely get a better multiple. If you just look on the books, even Bajaj with that big AUM is growing at the similar pace is with which HDB is growing even at a lakh crore of a base. So these guys will get those price to book multiples, and mind well 2013, 2014, 2015 में Bajaj used to get that 9.5 10 times book value.
the fundamentals of the company have improved by at least like 25 to 30% CAGR for at least what I can remember is last 10 years almost. But the stock hasn't gone down because the company wasn't the stock was in a price correction, sorry, in a time correction. And then the multiple has been normalized to this 5.5 times, 6 times, 5.2 times of a book value. But yes, SDB might never get that kind of a multiple, but yes, at what it's being offered to the investor, it's like, if I'm not wrong, it's like almost 45% discount to it. And which is, I feel this gap is very, very large, and I don't see a gap of like more than 20 or 25% between these both guys. So यार 20-30% तो यार कंपनी ने बहुत आराम से इन्वेस्टर्स के लिए छोड़ा हुआ है. एंड आई फील द क्वेश्चन इज legit, but it doesn't make a much sense ki if I consider that, then HDB is a bad, or what we can say, a fundamentally lower superiority investment. No, it's not that way. So overall, yes, this question was asked to the management in Ahmedabad IPO meet, if I'm not wrong, and the honestly the answer was not satisfactory. But the company is trying to get into those markets, but at least at this point they haven't able to hasn't able to crack those markets. But hopefully we expect कि 2-3 साल में बहुत सारा ग्रोथ आएगा फ्रॉम दैट सेगमेंट. एंड ये जो भी आई गेस 26-28% ऑफ द बुक है, सॉरी 23% की बुक है, दैट विल गो लाइक कि तीनों 33 पे आ जाए. सो होपिंग दैट हैपेंस इन फ्यूचर. गॉट इट. गुड आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा यार, ये जो ग्रॉस एनपीए और नेट एनपीए है विच हैज इंक्रीज फॉर एचडीएफसी इन दिस देन द लास्ट 2 quarters बिकॉज ऑफ ऑल द प्रेशर ऑन द फाइनेंस सेक्टर. इज इट ऑल्सो सीन इन बजाज फाइनेंस एज वेल? आई नो क्वांटम कम है उनका एनपीए का, बट हैज देयर नंबर ऑल्सो इंक्रीज? एंड like, is it in line with how the percentage is in line with what HDFC has increased, or do you think HDFC का book is slightly weaker तो उसमें ही impact आया है ये वाला? गिव मी अ मिनट, मैं आपको ना चेक करके बताता हूँ. आई डोंट हैव द एग्जैक्ट नंबर्स. Got it. इसके बाद एक जो दूसरा क्वेश्चन है वो भी पढ़ लेता हूँ, विच इज कमिंग अक्रॉस अ लॉट. एक ही आरबीआई का ड्राफ्ट सर्कुलर है कि एनबीएफसी को लेस देन 20% ओनरशिप पे जाना है प्रमोटर का, एंड 80% नीड्स टू बी विद पब्लिक. Actually, हाँ. So this question was covered in one of an interview. So वो मैंने देखा था. So what management answered कि yes, there has been a circular, but all the industry experts have had written lot of stuff to the RBI or the government to not go ahead with this thing, and the RBI and the government is considering to change this. ये जो उन्होंने बोला था ना 20% का, दे आर इंटेंडिंग टू चेंज दैट, बट देयर हैजंट बीन अ सर्कुलर कि आपको करना ही पड़ेगा. यस, दे आर इंटेंडिंग, बट इट्स नॉट अ डेफिनेट स्टफ. एंड ठीक है यार, मतलब there always has been in history also we have seen lot of such government interventions, but eventually those get abolished by some industry leaders. So hoping the same happens this time also. Yep. So it's a draft circular, as I said, तो अभी तक clarity नहीं है. But having said that, is this a risk on the business? Yes. ये एक Yes, risk है but which you should be at knowing. least for next 3 years I don't see anything. Yes, 3 साल के बाद कुछ हुआ तो हुआ. And if यहाँ I पे just लोग check on 3 the दिन के लिए investor. आए कि लिस्टिंग में क्या होगा 3 दिन बाद मुझे बताओ. चलो मैं अभी बजाज फाइनेंस के एनपीएस पे आ जाता हूँ. सो इन March 24 द ग्रॉस एनपीए वाज 0.85% एंड एनएनपीए वाज 0.37. अभी जो ग्रॉस एनपीए वो 1.12 तक चला गया था, बट इन द Q4 ऑफ दिस ईयर इट हैज केम डाउन टू 0.96, विच वाज अ सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट. एंड जो एनएनपी 0.37 का था उसका पीक था 0.48, विच इज नॉर्मलाइज टू 0.44. सो yes, there has been some increase, but very, very lower quantum than HDB Financial. Got it. So yeah, it's just that industry में ही थोड़ा pressure है then, so it should probably relieve now that the repo rates etc. have came down, is what my naive read would be. Next question तन्मय is कि बीच में थोड़ा चैटर चल रहा था कि कोई जापान का MUFG ग्रुप है जो इनको $2 billion में 20% स्टेक ले रहा था, valuing them at like 10 billion, they are came at 6 billion, so उतना गैप है.
Do you think that story is true, or do you think that's more of a just urban legend going around? Although I think आप इसका अनलिस्टेड से भी देख लोगे तो रेट लगभग $10 billion के टाइप ही चल रहा था, लाइक लास्ट एंड नहीं, अनलिस्टेड उससे रेट बहुत ज्यादा था, नहीं उससे बहुत ज्यादा था वो। कि 62 पे है ना अभी, अभी 740 62 पे। पे है। आई गेस एमयूएफजी जो है, मुत्सुबिशी फाइनेंशियल इज व्हाट आई नो। 2 महीने पहले दे हैड ऑफर्ड 20% स्टेक इन्वेस्टमेंट फॉर आई गेस एट क्लोज टू 82 और 84,000 crore, विच इज लाइक ऑलमोस्ट $10 billion, थोड़ा सा कम, उसे 9.8 मान लो। तो IPO is coming at almost 20 to 25% discount to that. But yes, that was true because that was what we can say, that was verified by the Mitsubishi group itself, which was there on the Bloomberg terminal. So मुझे थोड़ा बहुत याद है कि it was a verified news and I don't feel that this is a gimmick. यस, अभी थोड़ा सा एडवर्टीजमेंट तो, मार्केटिंग तो पक्का होगा, बट गिवन इट्स $1.5 billion IPO, तो इस मार्केटिंग का कुछ भी एक्चुअली इन रियलिटी कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। बट यस, इट्स नॉट अ स्टोरी, इट्स रियलिटी एक्चुअली। ऐसा एक नहीं, ऐसे 2 ऑफर्स आई थी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, देयर वाज वन मोर, और कोई तो बाहर का कंपनी था, आई एम नॉट एबल टू रिकॉल द नेम। इट वाज लाइक 4-5 months बैक, जब तक IPO का अप्रूवल नहीं आया था। दैट टाइम ऑल्सो देयर वाज सम ऑफर, बट दैट वाज लाइक a middle valuation of the 10 billion to आज का वो कुछ तो अंदर का valuation था, but I remember that was I guess 5 to 10% stake sale offer. So there has been 2 offers at premium to the IPO valuation. Got it, which is good. I also agree ki plus it is a HDFC parentage, right? So what you are getting is a brand, absolute brand in terms of something which has made money for a lot of people. So there would be interest in this. I feel this should do well. Again, don't hold me accountable to this, but I don't think it would ever list in a discount. A question है कि can it list it at discount? I don't think so. Like I would be very surprised if it lists in discount. Having said that, एक बार ये बात करते हैं कि शेयर होल्डर कोटा वगैरह इसमें कैसे काम करेगा, and then I'll ask you Tanmay for your opinion on what the subscription would be. In the meanwhile, if there are any more questions with respect to the business, now is the time to pose them before we kind of move forward to the next issue. तो शेयर होल्डर कोटा है इसमें, so basically जिस दिन RHP फाइल हुआ था उससे एक दिन पहले तक, आई थिंक 19th if I'm not wrong, बट चेक अगर आपके पास ईमेल आया है फ्रॉम HDFC सेइंग दैट दिस IPO इज ओपनिंग अप बिकॉज यू आर HDFC शेयर होल्डर, यू आर एलिजिबल फॉर शेयर होल्डर कोटा। आप इसमें 2 एप्लीकेशन लगा सकते हो, एक शेयर होल्डर कैटेगरी में और फिर एक यूजुअल विच इज योर रिटेल स्लैश HNI, वट एवर SHNI और बिग HNI। आप SHNI और रिटेल नहीं लगा सकते हो, बट शेयर होल्डर प्लस रिटेल स्लैश SHNI बिग HNI लगा सकते हो। शेयर होल्डर अलॉटमेंट प्रोपोर्शनेट बेसिस पे, यानी आप जितना ज्यादा एप्लीकेशन डालोगे उसमें कैप्ड, सब्जेक्ट टू अ कैप ऑफ मैक्सिमम 13 लॉट्स। 13 लॉट्स के ऊपर डालोगे तो आपकी एप्लीकेशन कैंसिल हो जाएगी। 2 लाख का कैप है क्योंकि शेयर होल्डर में। तो आपको अगर ज्यादा अलॉटमेंट चाहिए तो आप 13 लॉट डालो, कम अलॉटमेंट चाहिए मतलब पर शेयर होल्डर का यूज करना है तो 1 लॉट डालो। प्रोबेबिलिटी जो आपकी 1 लॉट शेयर होल्डर में डालने पे होगी उससे डबल होगी 2 गुना पे डालने में, उससे 13 गुना होगी 13 लॉट डालने में। तो शेयर होल्डर की प्रोबेबिलिटी वो होगी। रिटेल विल कंटिन्यू टू बी लॉटरी बेसिस, जैसे ही वो 1x क्रॉस हो जाएगा। अभी एप्लीकेशन टर्म्स में मैं देख रहा हूँ 0.53 टाइम्स भरा हुआ है IPO। आई थिंक पक्का रिटेल फॉर श्योर 1x तो हो ही जाएगा। तो रिटेल विल ऑल्सो बी अ लॉटरी। बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि रिटेल भरेगा नहीं तो वो 2 लाख प्लस वाली एप्लीकेशन को 2 लाख माइनस में कर देंगे वगैरह। फ्रॉम व्हाट आई कैन सी राइट नाउ, ऑल्दो बड़ा इशू है सो टाइम लगेगा, बट रिटेल शुड बी 1x इन टर्म्स ऑफ एप्लीकेशन वाइज एज वेल। I anticipate somewhere around 3x big HNI, 50 लाख फॉर्म में बिग HNI में आई थिंक 50,000 फॉर्म में 1.5 लाख टाइप आएंगे। एंड देन SHNI I think should be somewhere around 10x if I am not wrong. Again, these numbers could be off. And then QIB also I think would show a lot of interest because again it's a very good bet in terms of like the price at which at you are coming in, and एंकर बुक भी इसकी अच्छी थी। उसी बात पे मेरा तन्मय क्वेश्चन टू यू, व्हाट इज द एक्सपेक्टेड सब्सक्रिप्शन? डू यू एग्री विद व्हाट आई सेड? एंड टू, एनी अपडेट ऑन द एंकर बुक? What do you felt about the anchor book? And second question, a part of it, I was seeing there were no HDFC names in the anchor book. Is it because of the parentage or was there some other angle behind it? टू थिंग्स यार, सब्सक्रिप्शन टू बी वेरी फ्रैंक मैंने अभी तक बहुत ज्यादा कैलकुलेशंस करी नहीं है, बट
व्हाट आई फील कि जितना स्ट्रीट एस्टिमेट कर रहा है उससे ज्यादा आने वाला है. ओके, सो विच इज व्हाट आई गॉट अ हिंट लाइक 1 hour बैक, जब मैं थोड़ा सा मैंने 5 मिनट आई डिड द माई मैथ्स, बट आई फेल्ट कि जितना स्ट्रीट एस्टिमेट कर रहा है उससे ज्यादा ही सब्सक्रिप्शन आएगा. ओके, मैं एग्जैक्ट फिगर शायद बाद में डाल दूंगा. ओके, आई पुट इन आवर ग्रुप, देन यू कैन लाइक मे बी फॉरवर्ड इट. So now coming on the HDFC part, I don't have any definite answer, and no one has that answer. But what I came to know after, I guess, after the anchor book was कि there has been a mandate कि एक a group company which is HDFC AMC cannot invest into this anchor book. ऐसा कहा गया था. I don't know how much truth it is because no one knows, no one has the definite answer of this. What would be interesting to also see is कि अगर एंकर बुक में नहीं है तो would they buy on listing? हाँ, yes they can buy. Yes they can buy, but they cannot put in anchor book. Because if they want to buy, then तो there should be a solid demand in listing as well, right? Because हाँ हाँ हाँ, HDFC दे would वो not want to खरीदेंगे, miss. वो खरीद नहीं नहीं, दे विल नॉट, वो दे आर फॉर श्योर दे आर गोइंग टू बाय इट. Got it. Which then just gives a slight more probability of discount listing ko it even reduces further, right? Because you know there will be buyers because HDFC would not, uska jo mutual fund hai, those would not want to miss adding this name on in their like portfolio companies. करेक्ट, एंड आई थिंक फ्रॉम अ डिफरेंट एंगल ना. लेट्स से आपका कल लिस्टिंग है एचडीबी फाइनेंशियल का, और लेट्स से आपका एलन बरे और कल्पतरु बहुत अच्छा कर दे, होपिंग, तो देयर माइट बी सम अनदर काइंड ऑफ अ सेंटिमेंट. ओके, इवन फॉर एचडीबीएस इट्स अ बिग कंपनी, बट sentiment also matters. So I feel even that should help out. Hey, I can't hear you, Tanmay. Hello. Yeah, I can hear you now. Okay, okay, don't know what happened. ठीक है, बोलो चलो. बोलो. Give me 2-3 minutes before starting Sambhav. I can ठीक है. drink some water and come back. Yep, yep. Take your time. In the meanwhile, what I'll do is I'll just talk about ki what after this. So, Ellenbury and Kaltaru closed. If you want to listen to them, मैं उनका पोस्ट भी यहाँ पे ऊपर लिंक में डाल देता हूँ. ऑल्दो ये जो लिंक में मेरा यूट्यूब चैनल है उस पे वो डला हुआ है. सो डेफिनेटली गो अहेड एंड फॉलो द यूट्यूब चैनल. एंड उस पे ये आज शाम को आई विल ट्राई एंड मेक श्योर कि मैं ये HDB ये अपना ये आज वाला स्पेस भी उस पे आज डाल दूं, HDB फाइनेंशियल वाला, बिकॉज आई एम गेटिंग अ फ्यू मैसेजेस विद रिस्पेक्ट टू पीपल ट्रैवलिंग और बीइंग एट वर्क. I wish the time could have been better, but we are just trying to make do with the timing which is available. So इसलिए मैं उसको कोशिश करूंगा कि आज रात तक ही डाल दूं स्पेस, ताकि आप सब लोग सुन सकें. We'll try and do it ASAP. सेकेंड थिंग क्वेश्चन है कि सनटेक इंफ्रा ऑलरेडी कवर हो चुका है. सो यूट्यूब चैनल पर जब मैं डालूं तो आप यू कैन लिसन टू इट एट योर ओन लेजर. Then there are a few questions with respect to shareholder quota probability. I expect 8x तो जाएगा. Shareholder quota 1.78x है right now. तो उस हिसाब से देखोगे तो I expect 8 to 9x जाएगा, which would still be confirm allotment of at least one lot. So I personally expect कि सबको one lot मिलेगा इसमें at least shareholder quota में, and then कुछ extra shares भी मिलेंगे. बिकॉज शेयर होल्डर कोटा में जनरली देखा ऐसा गया है कि लोग ना गलत एप्लीकेशन भी लगा देते हैं, जो नहीं होते हैं शेयर होल्डर्स उनको लाइक कंफ्यूज हो जाते हैं और वो भी लगा देते हैं. सो बिकॉज ऑफ विच there is always over allotment, like over applications, and then the applications get cancelled and उसकी वजह से allotment ज्यादा आता है. I know like Bajaj Housing Finance was all over the place, like 20x type का था if I'm not wrong shareholder, and yet 10 में से 9 लोगों को शेयर होल्डर में मिला था allotment, and still मेरे को somehow तीन एप्लीकेशन में नहीं लगा था. I remember. But yeah, with that, before we move forward to the next company, which is Sambhav, just want to highlight कि इसके बाद जो है next week would be very SME heavy, I feel, क्योंकि उसमें क्या हो रहा है कि 30th is the cut off for bringing your IPOs under the old HNI rule. अगर ओल्ड HNI रूल में आ रहे हैं तो 30th इज द कट ऑफ, और उसके बाद न्यू में आना पड़ेगा. तो इसलिए कई सारे SME IPOs आएंगे नेक्स्ट वीक. We will see how we want to do them because again list है, but there are a few good companies which we definitely want to cover. नीतू योशी लिमिटेड करके कंपनी है जो आ रही है रेलवेज लोकोमोटिव में है, which is pretty good. I've heard good things about it. Prima facie, I don't know. We'll cover when we talk about them.
देन उसके अलावा एक एड काउंटी मीडिया करके कंपनी है जो जिसका जीएमपी अच्छा कर रहा है. देन देयर इज पुष्पा ज्वेलर्स एज वेल, एंड देन देयर आर टू मेन बोर्ड्स एज वेल विच आर कमिंग नेक्स्ट वीक. वन इज योर इंडो गल्फ क्रॉप साइंस, एंड देन आज एक और आरएचपी फाइल हुआ है क्राइजेक करके, विच इज ऑल्सो कमिंग. एंड देन देयर आर टू फर्दर main board IPOs as well, which are slated to come, including NSDL sometime in July. So July should also be interesting. So definitely keep a watch on this channel. With that, let me just check if Tanmay is back, and then we can move to Sambhav stage. Tanmay, can you hear us? Not yet, it seems. Any questions that anyone has can ask in the meanwhile. एक क्वेश्चन है कि एलन बरी का सब्सक्रिप्शन के बारे में बात करें. सॉ वेरी गुड सब्सक्रिप्शन ऑन एलन बरी. आई हैव आल्सो पर्सनली अप्लाइड. इंडस्ट्रियल गैसेस का मुझे यही लगता है कि जो एक चीज मेरे को हमेशा स्ट्राइक करती है, विच इज व्हाट वाज कवर्ड ड्यूरिंग आइनॉक्स इंडिया. जब आइनॉक्स इंडिया का लिस्ट हो रही थी तब उनके प्रमोटर ने बोला था कि इंडस्ट्रियल गैसेस विल ऑलवेज ग्रो एट 2x ऑफ जीडीपी. तो जो भी आप सोचो कि अगर इंडिया ग्रो हो रहा है, जीडीपी ग्रो हो रहा है, तो इंडस्ट्रियल गैसेस कैसे ग्रो होगा. सो आइनॉक्स इंडिया तो अपना एक ऑक्सिलरी कंपोनेंट लाई थी, विच इज की जिस टैंक्स वगैरह में गैसेस सेव होती हैं उसके आईपीओ किया था उनने. उनका जो मेन कंपनी आइनॉक्स एयर प्रोडक्ट्स, वो अभी भी आईपीओ नहीं लाए थे. तो इसलिए जब उसमें इतनी डिमांड थी तो आई थॉट दिस शुड हैव डिमांड. एंड जब मिल रहा था अलॉटमेंट तो आई वेंट क्वाइट हैवी. इनफैक्ट आई वेंट स्लाइटली हैवियर. लाइक एचडीबी में मेरे पास प्रोबेबली उतना मनी नहीं रहेगा. I have completely forgotten all the SMEs. I wish I had money to apply to any SME, Suntech वगैरह भी. I'll just put a few retail applications here and there. But yeah, no money for that as well. Most of the money is going into Ellenbury. And then I have taken some token bets in Kaltaru as well, because I kind of think that it's a slightly misunderstood company, but completely very risky. So definitely uh, take your own view. I kind of like the company, what they are planning to do, और उनका जो आगे का रेवेन्यू पोटेंशियल है. कल्पतरू को मैंने डिटेल में रिव्यू भी किया था लास्ट टाइम, तो अगर आपने नहीं सुना है तो आप उस पर भी जाके सुन सकते हो. With that, probability of negative listing in HDB, I wish I could tell you. I have told you the best I can, which is that we'll see. I don't anticipate a negative listing, but yeah, we'll see. With that, Tanmay, are you back? Nope. Let me see. Let me drop him a text. Any other questions? If anyone has any other questions, they can continue to post in the chat box. There's a question of safe enterprises. So safe enterprises कल cover किया था. जब लास्ट टाइम रोहित थे तब रोहित ने कवर किया था. Definitely go ahead and listen to the company as well. Having said that, the subscription wasn't as much as I would have hoped, but there was a lot of QIB demand, so I think it should open okay. Like they should at least try and protect as much as possible the IPO price, is how I kind of am looking at it. I have a few allotments. I would probably hold it if it opens low. I'll see what I want to do towards listing. The listing is tomorrow. There are a few questions with respect to the fundraise, but again, it's a company which I found just the promoter to be pretty well. So because of which I have confidence on the company, and I have applied just looking at all the anchor bats and HAME Securities name. We do not manage any FDOD. We just figure out, we have a few applications that we put in for IPOs. Any अरे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं यार. Why all SME want to come in old rule? Okay. So old rules में बेसिकली क्या है कि old rules में ना सब्सक्रिप्शन ज्यादा होता है, क्योंकि आपको एक लॉट के लिए आप कितना भी डाल सकते हो, राइट. एज सुन एज यू इट बिकम्स न्यू रूल, तो आपका सब्सक्रिप्शन कम हो जाएगा, क्योंकि आप एक सर्टेन अमाउंट ही डाल सकते हो, उसके बाद डाल ही नहीं सकते हो, राइट. तो सब्सक्रिप्शन विजिबली जब ज्यादा दिखता है ना, तो इट जस्ट कम्स अक्रॉस की ज्यादा डिमांड है इशू में, बिकॉज ऑफ विच उस पे ना प्रेशर कम होता है इशू पे, और प्रेशर कम होता है इसलिए वो लिस्ट अच्छा होता है, इज व्हाट द जनरल
feel is, क्योंकि आपका सब्सक्रिप्शन 100x 200x होगा बिकॉज पीपल विल पुट 1 CR 2 CR जस्ट टू गेट दैट वन लॉट। तो उससे क्या है कि, और वो उतना रेयर कमोडिटी होगा, कम लोगों को मिलेगा, तो वो लिस्टिंग पे लेने आएंगे। बट इसका अपोजिट हो रहा है अभी राइट नाउ, बिकॉज देर आर सो मेनी इश्यूज इवन इन ओल्ड, you like anything, since so many issues are coming together, there will be a lot which will just have a crash landing and will not list well, I feel। क्योंकि कितने आईपीओ एक साथ आ रहे हैं कि कितने देखे जाएंगे। सो एनीथिंग which is average, which would have probably done well in a market where there was just one company, it might not do so well in the current scenario as well, is how I kind of look at it. That is what my personal view is। How many lots to be applied in shareholder in HBD? जितना ज्यादा अप्लाई करोगे उतना बेटर रहेगा। 1 से लेके 13 तक आप अप्लाई कर सकते हो। एक लॉट अप्लाई करोगे आप अगर, तो आपकी प्रोबेबिलिटी जो होगी वो और 13 लॉट्स करोगे तो 13x होगी, क्योंकि प्रोबेबिलिटी इन शेयर होल्डर इज प्रोपोर्शनेट एंड नॉट लॉटरी। तो 13 गुना अप्लाई करने पे आपका 13x चांस होगा। What potential do you see in Elimbari? Already covered in last page. Please go ahead and have a look at it definitely. And then we have also posted our final verdict on that as well. शेयर होल्डर कोटा में एप्लीकेशन अप्लाई करने के बाद कैंसिल नहीं कर सकते। अनलाइक रिटेल यू कांट कैंसिल। Hello. Yes. So with that, maybe what we can do is to take in a few questions. Now we can move forward to the third issue of the day, which is Sambhav Steel. थोड़ा सा जल्दी में Sambhav Steel को close करते हैं in the next 10 minutes, and then we'll end the space. Setting up Sambhav Steel, incorporated in 2017, the company is a manufacturer of electric resistance welded ERW steel pipes and structural tubes, hollow section in India. The company's manufacturing facility is located in Sarora Tehsil, Raipur, in the mineral rich state of Chhattisgarh। एक बार इसके बारे में समझेंगे। I know there is a lot of interest with respect to Sambhav as well, because there are a few good names which are backing the issue. We'll try and understand, especially on the valuation part. I think the company is well, but I'm slightly concerned on the valuation part. In terms of the IPO, it's a 540 crore IPO, 540 crore का IPO है, जिसमें से I think, let me just see how much is the fresh issue. I'm forgetting the fresh issue का ब्रेकअप। हाँ, सो 100 CR का OFS है, 440 CR का फ्रेश इशू है। सो 440 CR इज फ्रेश आउट ऑफ द 540 CR। इट्स कमिंग एट अ वैल्यूएशन ऑफ 2416 crores। 2400 crores के वैल्यूएशन पे कंपनी आ रही है, जिसमें दे आर डाइल्यूटिंग लाइक 540। सो somewhere around 25% कंपनी का डाइल्यूट कर रहे हैं, ऑल्दो प्री आईपीओ भी है। सो द डाइल्यूशन, सो इट शुड फर्दर कम डाउन, द प्रमोटर होल्डिंग शुड फर्दर कम डाउन। इन टर्म्स ऑफ द FY24 फाइनेंशियल्स, क्योंकि इसमें फिर से 9 मंथ्स का ही फाइनेंशियल दिया हुआ है। FY24 में कंपनी ने 1289 करोड़ का टॉप लाइन किया था एंड 82 करोड़ का बॉटम लाइन किया था। सो इट्स कमिंग एट लाइक 30 PE FY24, and FY25 में bottom line is just 40 in the first 9 months. So is there a chance of degrowth, etc.? We don't know right now, although they will release their results pretty soon from what I could see in the promoter call. In terms of the LM is Nuama and Motilal Oswal. So with that, over to you, Tanmay, to talk about Sambhav Steel. So Sambhav Steel Tubes Limited is a Raipur-based, one of the largest manufacturer of electric resistance welded steel pipes and structural tubes. So ERW is electrical resistance welded, okay, and structural tubes in our Desi menu is called as hollow section. So this company has 2% market share in India's or domestic ERW pipe segment. So the company is also one of the two Indian companies with complete backward integration in a single place. Okay. So I'll come on this backward integration part after some time. So the company the company's products are used in sectors like housing, infrastructure, water transportation, agriculture, automotive, telecom, oil and gas, engineering, etc. So the products of the company are used in all the major sectors. Okay. Uh, Now, before coming on the capacities, one need to understand कि ये जो सारा इनका product है, see what a traditional Indian company in the ERW segment does is, okay, what they do is they just take the mother hollow or the HR coils, they import or take it from a different player, then they process and make a pipe.
ओके और ये पूरे इसमें अराउंड 4% काइंड ऑफ अ पैट मार्जिन होता है एंड इफ यू आर वेरी ऑपरेशनल एफिशिएंसी आपका आ गया है फैक्ट्री पे तो विल गेट लाइक 5%. बट व्हाट दिस कंपनी हैज डन, this company has made an in-house HR coil production and also the mother oil production so that they are backward integration पर बहुत सारी चीजें. I'll mention everything by point in some time, but you can understand कि this company is backward integrated और सब कुछ खुद का बनाते हैं. Even 60 or 70% of the power also which company consumes is manufactured or made in-house, so that even the power costs are comparatively lower, not much, significantly lower than its peers. So the company has large capacities of, first of all, if I come to the ERW pipe segment, the company has an installed capacity of 1.7 lakh metric tons per annum. Now coming on the integration, the company has a sponge iron capacity of 2 lakh MTPA, the mild steel billets of 3 lakh MTPA, the stainless steel billets of 60,000 MTPA, the HR coils of 2 lakh 90,000 MTPA, the stainless steel HR coils of 60,000, the ERW and galvanized pipe segment of 3.5 lakh and GP of 58,000. So you can understand कि ये कंपनी को अपना प्रोडक्ट बनाने के लिए जो भी बैकएंड में जरूरत है वो सबका ये इन हाउस मैन्युफैक्चरिंग करती है, सो दैट their dependence on some other vendors reduces significantly. Okay, the company has around 700 dealers nationwide. Now coming on the issue size, the company is raising 540 crores, out of which 440 crores is a fresh issue and 100 crores is an OFS done by the promoters. Out of the 440, the company is repaying the debt of 390 crores and the rest 50 crores will go towards general corporate purposes. Uh, Now, coming on the debt part, after the debt has been repaid, what I was looking at, see, there was some correction in one two notes that इनका debt कुछ 640 type है. But when I saw the debt was like 340 at the end of FY24 and it had went to like roughly 400 in FY20, 9 months FY25. It would be more clear कि exactly कितना debt है in the Q4 numbers which company is expected to publish next another 2 weeks after the listing. So उस टाइम शायद इसमें बहुत ज्यादा क्लैरिटी आ जाएगा, but most likely the companies के cutting off majority of the debts on its books. So this will also trigger an interest cost saving of close to 30 to 35 crores per annum. Already 4 months are done in the year, so maybe the interest cost saving could be like roughly 20 crores or on a higher side of 25 crores. Now coming on its financials, the company did a revenue of 937 crores and a PAT of 60.4 crores in FY24, 23. In FY24, the company did a revenue of 1,286 crores and a PAT of 82.4 crores, like almost a 32% का top line jump है. And in first 9 months, the company did a revenue of 1,016 crores, 1016, and a PAT of 40.7 crores. Now, वन थिंग हियर टू लुक लाइक, जब आप इसको एनालाइज करते हो यू से कि यार ये तो साल का कुछ भी पैट नहीं कर रहा है, इट इज डूइंग लाइक रफली 52. इफ आई डू द टीटीएम बेसिस तो उसके ऊपर तो वैल्यूएशन लुक्स लाइक 40 टाइम्स, विच इज इवन मोर देन 40 टाइम्स, 43 44 टाइम्स दिखता है. बट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि इनका साल का जो Q4 होता है ना, साल का ऑलमोस्ट लाइक आई वुड से 30 to 35% रेवेन्यू वहां से आता है. सो इट्स अ Q4 हेवी बिजनेस एंड द एफिशिएंसीज लाइक पैट के लेवल पे भी वो कंपनी का जो मेजोरिटी पैट है वो Q4 में आता है, विच हैज बीन द हिस्टोरिकल ट्रेंड. आई वाज स्पीकिंग टू सम ऑफ इट्स प्री आईपीओ बैकर्स दैट सेड इट कि सर इनका Q4 में बहुत ज्यादा एफिशिएंसीज आती है, उनके रेवेन्यूज भी बहुत ज्यादा आते हैं, पैट भी बहुत सारा आता है. Now I don't know the exact numbers, but it is an indicative message कि यार इनका Q4 अच्छा रहेगा and the whole year will get balanced. We don't know the exact number, but if I just come on its FY26 earnings, कंपनी का वो क्लियरली दिख रहा है कि बिकॉज सी इनका October 24 में एक बहुत बड़ा कैपेसिटी लाइव जा चुका है. ओके, सो उसका पूरा इंपैक्ट FY26 के फाइनेंशियल्स पे आएगा, बिकॉज जो कैपेसिटी उसका रैंपिंग अप मे बी 2-3 महीने में होगा, विच इज लाइक February March, एंड होल FY26 में उसका इम्पैक्ट आएगा. सो even if we consider like 25 to 30% growth, which is historic in nature, and the like 25 crore का debt repayment with almost like stable to a bit efficient margins, ये जो नंबर्स आते इट इज लाइक 150 करोड़ काइंड ऑफ अ पैट और इवन अ बिट मोर देन दैट, 155 टाइप का नंबर आता है, वेरी वेरी रफ कैलकुलेशंस. तो
if we look it on FY24, it looks like close to 28, 27, 28 or 29 kind of a P. If we look it on to FY26 earnings, the IPO is getting priced at roughly 14 and a half to 15 ka P, okay, which is certainly not expensive. Now, you need to understand कि peers कितने पे और peers और इसमें difference क्या है. फर्स्ट इसकी पियर्स जो है, पियर्स बहुत सारे, एपीएल अपोलो हो गया, रिसेंटली लिस्टेड स्कोडा हो गया, जेटीएल इंडस्ट्रीज हो गया, आपका सूरज लिमिटेड हो गया, हरिओम हो गया, विच इज अ पार्टली अ पीएल. ऑल दीज गाइस आर ट्रेडिंग फ्रॉम लाइक 30 टाइम्स, नॉट थर्ड, FY26 इफ आई टॉक लाइक 25-27 टाइम से लेके अब 50 टाइम तक ट्रेड करते हैं, ओके. एंड दिस सेगमेंट लाइक इट लुक्स एज अ कमोडिटी बिजनेस फॉर फ्यू प्लेयर सिटीज, बट दिस सेगमेंट has done extremely well. All the players in this segment have made money for the investors. So, uh, so this segment always gets those what we can say heavy multiples ki 30 time, 40 time, 50 time. Even if I remember, if I'm remembering correct, FY23, 24 mein APL used to get those 70, 80 ka P also. Even now it's trading at, if I'm not wrong, 60 kind of a P. So this segment trades at very, very good multiples. Even if I come on EBITDA, for some players it's even at like 12, 14, 15 times, and for some it is like 40 times. This company is coming at like close to 13, 14 times or even 12 and a half times. So on valuation front, if you look at FY25 TTM, you won't invest in this company, but it's not correct to look at those numbers. You need to look at extrapolated FY26 numbers so that you will get a very right picture towards the company. And इसमें difference क्या है with the peers? What more than half of the companies in its peer segment do is HR coil मंगा लिया, मदर ऑयल मंगा लिया, उसको प्रोसेस करके ERW पाइप बना के बेच दिया. इज व्हाट companies do. This company is a fully backward integrated company, so that they have the control on its supply chain, its control on the quality, control on the raw materials, and control on the pricing, and eventually the margins of this company are higher than the peers. Like this company will eventually make like close to 7.5% kind of a PAT, where peers are making like 4.5, 5% PAT. So ये जो difference है of the backward integration which makes this company a disaster proof company, so that कुछ भी ऊपर नीचे होता है, so this company has a natural hedge because it has control over its complete supply chain of the raw materials. And इसका dealer network, I had actually done some ground research also की, and eventually I got a connect who is one of the leading dealers of Sambhav. So got a very good feedback from those guys also. So overall, what I see, by the way, the pre-IPO names were also pretty decent, very good names. And I guess पहला राउंड इनका I guess 900 पे हुआ था, दूसरा कुछ 1200-1300 करोड़ पोस्ट मनी पे हुआ था. वहां से बिजनेस हैज बिन ऑलमोस्ट, आई वुड से FY26 में बोलूं तो ऑलमोस्ट डबल है. एंड even the valuations are also doubled post money. So if we talk on the pre money side, 50% like around हाँ 50-60% premium पे आ रहा है with like 60-70% increase in business, which is fair. I won't say cheap, but also not unfair. So it's okay. The anchor book was decent. Not, I won't say decent. It was pretty good. White Oak leading the anchor. 40% type का anchor was with White Oak and Ashoka White Oak. दोनों के affiliate entities थे. Motilal Oswal had a good anchor. Niveshai continued to back this company. They are invested in this company since the first round. Nuama was there. Citigroup was there. Nomura was there. Shine Star Buildcap was there. So overall, the anchor book was actually quite small in terms of the size of the company, but the names were pretty decent. So overall, what I see कि इसमें listing in पक्का बनेगा, आराम से apply करना है. I don't see any chances that this will not list well. I feel like 10-15%, 20%, even 25% is possible for this company. So even if I value this company at like 25 times, 26 or even 22 times kind of a multiple, 50% plain vanilla upside. So I'll be applying this issue. Got it. Then my question है मेरा, मैंने promoter, by the way, I listened to the promoter call. I definitely have to say the promoter is very good. Like the promoter quality is very, very good. He is very humble, and then he also understands his number. The way he was talking कि मेरा ROC इतना आएगा, इसमें मेरा debt equity इतना होगा, मेरे को इतना ROC निकालना है. Promoter quality is exceptional, is what I can say.
valuation थोड़ा concern है, but before that, just want to understand from you on business side, from what I have learned till now in all my MBA days. If you do parts of the business, you will always be specialized because you will be able to do economies of scale. Basically, अगर आप वो sponge iron नहीं ले रहे हो, direct raw material ले रहे हो और सिर्फ last part process कर रहे हो और वो scale पे कर रहे हो, you'll always be able to have a better margin than someone जो पूरा प्रोसेस चला रहा है एक से लेके पांच तक, क्योंकि उसके पास इतना वॉल्यूम ही नहीं है। ये मैं इसलिए भी बोल रहा हूँ क्योंकि जैसे प्रमोटर कह रहा था कि जो ये शीट्स यूज होती हैं, लाइक जो शीट्स बनती है जिससे ये बनता है, अगेन टेक्निकल नहीं हूं मैं था, तो उसमें से 5% ही ये पाइप बनते हैं, हॉलो पाइप। बाकी 95% तो कहीं और जाता है। तो जो बैक एंड इंटीग्रेट कर रहे हैं इसका अपन, तो उसमें तो मार्जिन कम नहीं होना चाहिए, क्योंकि तुम पूरा झंझट उठा रहे हो अपने ऊपर और तुम्हारे पे इतना वॉल्यूम भी नहीं है हर चीज का। लाइक तुम पे 5 अलग अलग प्रोसेसर्स हैं जो तुम चला रहे हो, तो बैकवर्ड इंटीग्रेट करने से उसको फायदा कैसे हो रहा है? लाइक व्हाट एम आई मिसिंग इन दिस? See, your question was right. If the company had a revenue of 500 or 1,000 crores, okay? Uh, Company has already got that scale, and company is able to achieve those efficiencies towards the backward integration due to the increased scale of the company. Okay, अगर ये नीचे हो तो maybe might not. If it's clearly visible on the margin front also. Okay, FY23 में margin शायद इतने नहीं थे. It was like 4.5% kind of a pat. But up now we are talking about 7% PAT, because the reason is simple. पहला तो debt repayment for sure, and the second is the increase in the efficiencies. So and there is one more stuff ना यार. See, this is a steel segment and not an electronic segment कि आप like Dixon की तरह कुछ भी कर लो. So आएगा assemble करके दे दो या फिर manufacturing part करो, partly मंगा लो. It's not a electronics, it's a steel, and you know how volatile the prices are. And ये बहुत ज्यादा सेंटिमेंट पे भी ये चलता है. कई बार आपको हेजिंग करनी पड़ती है, कई बार आपको यू हैव टू टैकल विद द इंटरनेशनल प्राइसिंग आल्सो. कई बार यू हैव टू टैकल सम डिलेज इन द केपेक्स, डिलेज इन द प्रोजेक्ट, डिलेज इन द गवर्नमेंट साइकिल. स्टिल द कंपनी हैज एक्चुअली, इफ यू जस्ट चेक आउट ऑन द बैलेंस शीट, वो दिखता है कि कंपनी बहुत एफिशिएंटली चल रही है. बैलेंस शीट बहुत अच्छी है इनकी. ओके, ट्रेड रिसोर्स में कोई दिक्कत नहीं है, सब अच्छा लग रहा है. एसेट्स आर लुकिंग गुड, द नेटवर्थ इज गुड, द रिजर्व्स आर गुड, बैलेंस शीट क्वालिटी इज गुड, कैश फ्लोज आर अच्छे, कैश फ्लो ठीक ठाक है. बहुत अच्छे नहीं बोलूंगा, बट दे आर इन अ केपेक्स मोड, सो अपन एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते बहुत अच्छे रहेंगे. तो अगर कंटिन्यूअसली एंड हेवीली इन्वेस्टिंग, इनका और एक ग्रीनफील्ड एक्सपांशन आ रहा है विच विल गेट लाइव. इनका फर्स्ट 3 या 4 फेज में, उसका फर्स्ट will get live into I guess December for 2026. इनका कैपेक्स थोड़ा ज्यादा बड़ा होता है, बट स्टिल दे हैव वेरी वेरी इनफ कैपेसिटी टू इंक्रीज. तो इनका थोड़ा जो रॉ मटेरियल है वहां पे कुछ 80% काइंड ऑफ यूटिलाइजेशन है, बाकी पे 55-56. इफ यू जस्ट चेक आउट ऑन इस कैपेसिटी यूटिलाइजेशन है, जो सबसे कम यूटिलाइजेशन जो आपको कुछ तो ERW वायर है, दैट ऑल स्टेनलेस स्टील, वो भी 36% है. सो इनका सब कुछ का जो कैपेसिटी एक्सपेंशन है ना, वो यूटिलाइजेशन है ना 40% प्लस ही है. It's not below that. So, what you feel is, what you are saying is not wrong also, but not completely right also. It might be right for a segment like electronics, or a segment like, you know, कोई भी किसी भी चीज की असेंबली करना might be a better word, but इसमें आप क्या असेंबली करोगे? So, what company is doing, company has been pretty successful, and यहाँ से जितना भी कंपनी स्केल करेगी, बॉटम लाइन पे उसका इम्पैक्ट बहुत ज्यादा आने वाला है. सो व्हाट आई फील दैट कंपनी इज ऑन दैट आर्क ऑफ मेकिंग इटसेल्फ अ वेरी वेरी लार्ज प्लेयर्स, एंड competing with these big guys at this quality is not an easy task and should be appreciated. And I will not be surprised कि मार्केट इसको बहुत ज्यादा प्रीमियम मल्टीपल दे. होपिंग इट विल डू, बट यार ठीक है, मेरे को ओवरऑल तो ठीक लगा. आई डिड नॉट फाउंड मेजर रेड फ्लैग्स. एंड ऑन द प्रमोटर पार्ट, when a normal person sees ना कि यार he's not answering with that smoothness or efficient way, अंग्रेजी बात नहीं कर पा रहे, when you listen him for 5 minutes ना, you understand कि इनको बिजनेस और धंधा बहुत अच्छा आता है. Many a times we get into that clue कि यार अब मैनेजमेंट बहुत अच्छा प्रेजेंट नहीं कर पा रहा है और दिस दैट, बट दे आर टू गुड इन बिजनेस. एंड आई हैव सम connect who knows the management pretty well, and we also had some virtual meeting also. So we know कि ये I had seen some interviews, got some ground feedback also. So मुझे बहुत अच्छा लगा, okay, frankly speaking. But is one other player from that ERW segment, but with some what we can say more efficient way, थोड़ा backward integration, थोड़ा more एक अच्छे scale की company है. Because अभी स्कोडा भी है recently, but they are not on that. They are doing increasing the welded portfolio, so उनका margin जितना तो वही पे रहे.
एंड दिस कंपनी इज इनटू अ डिफरेंट सेगमेंट जिसका मार्जिन ऐसे ऊपर ही जाना है, नीचे नहीं आने वाला है. एंड दैट 2000 करोड़ ऑफ अ स्केल. FY 26 वी आर सेइंग कि 2000 करोड़ कर लेंगे. 2000 crore scale with this complete integration and that efficiency with like 7.5% PAT is not an easy task. So hoping this company should do pretty well. Got it. एक और क्वेश्चन है, एंड अगेन आई एम नॉट अ एक्सपर्ट ऑन दिस, आई एम नॉट श्योर इफ यू नो एज वेल. हरिओम पाइप्स भी वर्टिकली इंटीग्रेटेड है, उसको तो नहीं मिल रहा पीई कंपैरेटिवली, सो एनी पॉइंट्स, हैव यू रेड Yes, उसमें हरिओम पाइप्स? कुछ तो हुआ था उसमें. I remember once Hariom used to trade at very very good multiples. बट उसमें कुछ तो हुआ है. गिव मी अ मिनट, मैं आपको ना निकाल के देता हूँ. एक्चुअली मैं इस कंपनी में इन्वेस्ट करके पैसा बना चुका हूँ. हरिओम पाइप्स एक टाइम पे तो 40 पीई भी है, मेरे को दिख रहा है. लाइक अभी पीई गिरा है, लाइक इट वेंट 2023 में ड्रास्टिकली बहुत फ्रॉम पैसे बने थे अगस्त इसमें, टू बहुत पैसे बने थे इसमें अगस्त से अच्छे. मार्च, 6 महीने में पीई हैज केम डाउन फ्रॉम 40 टू 16. सो ड्रास्टिक पीई डी रेटिंग हुआ है. हम्म. पता नहीं क्या हुआ है. सो ग्रोथ भी तो ठीक ही है, सब बुरा तो नहीं है ग्रोथ बाय एनी चांस. बैलेंस शीट ठीक ही है. पता नहीं क्या हुआ है बट maybe स्टिल यार when ये you are posting your final verdict, one thing to post is also like just in relation to Hari. I'll tell you man, posting one final word it takes like 3 hours, 2 to 3 hours. कल के तो दोनों बहुत मुश्किल थे. ओके, बहुत मेहनत करनी पड़ी थी. सो इट टुक मी लाइक 2 hours, 2.5 hours for कल तुरंत like 3 hours for almost 3.5 hours for Ellenberg, because each calculation you do is think you write like is to be cross checked. So उसको टाइम लगता है बट यस. थोड़ा ये जो HDB ना थोड़ा मैकेनिकली होएगा क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी नहीं. सो पढ़ा रहेगा बट इट शुड नॉट बी वेरी कॉम्प्लेक्स. सो आई होप कि मैं थोड़ा चाय वाय पी लेता हूँ. ओके, आधा घंटा फ्रेश हो जाता हूँ, फिर 8-9 बजे तक डाल देता हूँ होपिंग. एंड रात में फिर आई ट्राई माई लेवल बेस्ट फॉर संभव. मोस्ट लाइकली आज रात ही डाल दूंगा मैं, लेट नाइट में भी 12-1 तक संभव हो जाएगा. Got it. Okay. If there are no more questions, I think we are towards the closing part of the space. I'm just seeing if there was any more question with respect to. Again, one question is कि अगर IPO इतना close है, like Q4 results और Q1 results इतना close हैं, so maybe they should have brought their IPO once they had the results. But it doesn't work that way. I think there is a lot of planning which goes into IPO कि कब लाना है, किस डेट्स पे लाना है, कौन से फाइनेंशियल्स के साथ लाना है. अब अगर नए फाइनेंशियल्स डालने हैं तो फिर से वो पीयर ऑडिट कराओ. देन यू आर डिलेइंग इट बाय like 1-2 months. So it's not a 1 week डिले कि चलो रिजल्ट आ गया ये डाल दो और फिर सबमिट कर दो, फिर वो And सब. क्या होता है many a times, see there are very less instances where promoter have a choice कि हमको Q3 डालना है, Q4 डालना है. बट many times it's like related to the other factors in the company. तो might be वो चाहते हुए भी, because I'll tell you one thing, if the company ये कंपनी अगर Q4 डालती ना तो शायद उनके लिए अच्छा होता. Okay, to get that better subscription, but they did not. Actually this is I take it on a positive note. आस्क वाई, बिकॉज इनका जो Q4 होगा और जो कॉन कॉल होगा ना यार, आपको पूरी कंपनी कॉन कॉल में समझ में आ जाएगी. तो आपको 4 महीने नहीं रुकना पड़ेगा कंपनी समझने के लिए. यू थिंक फ्रॉम दैट एंगल. एंड लेट्स से लीला होटल्स है, आके लिस्ट हो गया, Q4 दे दिया, Q1 आने को और 1.5 महीना कहीं नहीं गया. उस 1.5 महीने के बाद आपको कंपनी ग्रोथ प्रोस्पेक्ट समझना पड़ेगा. एंड प्रमोटर सामने आके इंटरव्यू दे दे, जिसका प्रोबेबिलिटी बहुत कम है. आई नो दोस प्रमोटर्स. सो एक्चुअली इट्स पॉजिटिव. आपको बहुत जल्दी कंपनी समझ में आ जाएगी. लाइक लिस्टिंग के 2 हफ्ते बाद यू विल गेट अ गुड कॉन कॉल, यू विल गेट अ गुड, मे बी शायद गाइडेंस भी दे प्रमोटर्स. मोस्ट लाइकली देख के तो लग रहा है मुझे दे देंगे. सो आई टेक इट ऑन अ पॉजिटिव नोट कि बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा कंपनी आफ्टर लिस्टिंग. Yeah, for sure. I remember उनने कॉल में बोला था कि they would also like come up with the annual report by 10th of July, which is a big statement, right? कि वो तुमको ना केवल कंपनी का कॉन कॉल करे, प्रॉपर एनुअल रिपोर्ट भी बना के देगा. तो जहां से आपको धंधा पूरा समझ में आ जाएगा कि भाई आगे क्या होने वाला है, पीछे क्या हुआ है, कौन सी कैपेक्स क्या होनी है. सो दैट इज अ डेफिनेट प्लस विच आई कैन अंडरस्टैंड एज वेल. One thing more which I think is again kept to be in mind is again just a soft thing. But इसके जो I think इसके जो investors होंगे ना काफी strong hands होंगे इसमें, because the pre-IPO group has just made a lot of money for a lot of people, so they will just hold on to this issue as well. So it should, because of that, also command a slightly higher premium, is what my personal hunch, can be completely wrong. Having said that, I'll also be applying limited to this issue with whatever money that I have, is what.
the review about Sambhav is. With that, we are towards the close of the space. I see there are a few questions कि ये रामा टेलीकॉम करके जो आईपीओ आ रहा है उसको एसएमई आईपीओ आ रहा है उसको कवर कर दो. आई विश मैंने पढ़ा होता तो मैं कुछ बता बट अगेन आई हैव एब्सोल्युटली नो आइडिया. मैं जानता हूँ कंपनी को, एक्चुअली मैं इसको 4-5 महीने से जानता हूँ, आपको पता है थोड़ा स्टोरी मेरा इसके साथ तो। हाँ मेरे है को. नॉर्मल सा कंपनी यार, मतलब ऐसा कोई हम्म. उटपटांग नहीं है, नॉर्मल सी कंपनी एकदम। देयर इनटू हम्म. ऑप्टिक फाइबर, कोलकाता बेस्ड कंपनी है। तो ठीक है, मतलब ऐसा कुछ मेरे को बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग तो नहीं लगा, नॉर्मल सा कंपनी एकदम, लाइक एवरेज, बिलो एवरेज। Yep. We'll see next week हमें कौन कौन सा एसएमई करना है. We'll come up with a list. But yeah, that is what is. There's one more 100 crore issue also ना पुष्पा करके, पुष्पा तो वो पुष्पा भी आपको ज्वेलर्स करना करके आ पड़ेगा। रहा है. सो वो भी देखेंगे कैसे करते हैं. अगेन वील ट्राई एंड सी की टाइमलाइन कैसे बिठाना है बिकॉज देयर आर so many issues and Tanmay has a different schedule. I have a different schedule. Yash and Rohit have a different schedule. Yash can also. I would also want to Yash to do Neetu Yoshi because he has met Neetu Yoshi management. So it would be interesting next week. But yeah, with that we can kind of close today's episode and we will see you back next week. Happy IPOing, everyone. Thank you so much. थैंक यू एवरीवन।